Good morning, friends. Very good morning. Good morning, all of you guys. Yes, good morning. Good morning. Okay, guys. So, without wasting time, today first of all, we are going to start bills of exchange and promissory note. Okay. So, first of all, guys, the first important point is these are the negotiable instrument, right? So, there are three types of negotiable instrument which we will learn in this chapter. That is first bills of exchange, second promissory notes, and third is a check. Now what is the meaning of negotiable? Negotiable, as you know, it is transferable. Negotiable का मतलब होता है transferable. You can transfer the ownership. You can transfer the ownership, right? Yes. So whenever ownership can be transferred, it is known as a negotiable. So you can transfer the ownership by delivery, by possession. You can transfer the ownership easily. It is called negotiable. Mihir Pujara ji, can we just hold for a minute? We would like to tell something to the students. I'll take only 5 minutes to tell something to the students because this is a new scheme we have started. A very good morning to all the students here. As you must be aware that these classes are for the September 2024 examination, and the basic trend of these classes, you should see the recorded lectures first and then you'll be able to understand this is basically a summary lectures. We are covering two chapters today. One is bank reconciliation statement and another one is bills of exchange. Mr. Mihir Pochara has started with bills of exchange this time, but yes, at this stage we expect you that you have already covered, you have already studied the recorded lectures. We are hosted there on ICAI website. I'll show you where the lectures are hosted because I'm receiving a lot of queries that how to proceed with these. These lectures are only the summary lectures, live lectures are only the summary lectures, but on the other hand, all the recordings are hosted on ICAI website. All the recordings are available on ICAI website. You can see from here. See, this is recorded lecture batch, current batch 2 here. All the recordings are here. Where you click on the accounting button, all chapters recording are available here. On the other hand, a schedule is also hosted. This schedule says that the live classes, when will the live classes will be there. So before going to any live class, you should study the recordings of these chapters and then proceed towards the live class. All right. I hope, and all the queries, please request you to give time to the faculty to complete the chapter first, to complete all the summarization first, and then ask your queries. We are requesting you to take the queries, sir. Please take the queries after 1 p.m. so that you can complete both of your chapters. And students, you can ask the queries accordingly. Please open your mic only when you're asking the queries, and your mic as well as your screen whenever you're asking the query.
Okay, sir, you can continue with the things. I hope this is clear with you all. So please see all the recordings before going to the live session. The schedule of the live session will be hosted, but they will only be a summary lectures, right? Recordings you have to see first. You have to clarify your doubts, jot down the doubts, and you can ask in your the summary lectures. All right. Over to you, sir. Mihir Thank you. Pujara ji. Thank you, ma'am. Thank you very much. Yes. Okay, guys. So, as ma'am clarify, this is summary lectures, or you can say only then doubt solving is there. So, I will summarize the important points, important formulas, important entries. Okay. And then we will go for the questions and queries, right? So, this is a very basic table which you can see on screen. How these bills are generated. Okay. As you know, Mr. A draw the bill on Mr. B. Then Mr. B will accept the bill. Then Mr. A is known as drawer and Mr. B is known as drawee. For A, it is a asset. For B, it is a liability. For A, it is a bill receivable, and for B, it is bills payable. So this is very absolutely basic regarding the how the bill is created. How the bill is created, right? Now, as you know, A can endorse the bill to C. If A endorse the bill to C, then A is known as endorser and C is known as endorsee. The third party comes into picture. Now, the important next point is who is paying. Now, see, pay means the person who will receive the money. The person who will receive the money as on date of maturity. As you know, bill may be of number of months, it may be of number of days, right? Date of maturity, it means the date on which the bill will mature. Okay. So, जिस दिन बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी होता है उस दिन जिसको पैसा मिलता है उसको हम पे बोलते हैं. ओके. सो हु इज पे means the person who will receive the money on date of maturity or on due date. ओके. अगर मान लो कि 2 महीने का बिल है, उसका ड्यू डेट से फॉर एग्जांपल 1 जून है, तो 1 जून को जो भाई साहब पैसा रिसीव करेंगे उसको हम बोलते हैं पे. पेयर मीन्स जो पैसा देगा, पे मीन्स जो पैसा रिसीव करेगा, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट 4 ऑप्शंस. Remember guys, drawer that is A. A has 4 options. Regarding entire chapter, A के पास 4 options होते हैं. What 4 options A has? And write clearly or understand clearly के चारों 4 option up to the date of maturity होते हैं. So whatever 4 options I am sharing with you, A के पास इस बिल के related 4 options होते हैं. And he has to execute these 4 options till the date of maturity. अगर 2 महीने का बिल है तो 2 महीने में A इस बिल के साथ 4 ऑप्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है. कंपल्सरी नहीं है लेकिन कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो. नाउ these are 4 important options. First, A can hold the bill. मतलब वो बिल अपने पास रखेगा, रिटेन करेगा, किसी को नहीं देगा. सेकंड, ए कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंक. मान लो कि 2 महीने का बिल है लेकिन ए को पैसों की जरूरत पड़ी जल्दी, तो बिफोर ड्यू डेट उसको पैसा चाहिए तो बैंक उसकी हेल्प करेगा. बैंक उसको बिल क्या करके देगा? डिस्काउंट करके देगा. ए कैन एंडोर्स द बिल. जैसा आगे सिखाया था वो पीपीटी में, ए को सी को पैसा देना है बिकॉज सी इज ए सप्लायर टू द ए. ए ने सी से परचेस किया है, ए को सी को पैसा देना है, तो वो क्या कर सकता है? जो बी का बिल है वो सी को क्या करेगा? एंडोर्स करेगा. मतलब अब पैसे एज ऑन ड्यू डेट ए को नहीं मिलेंगे, वो पैसे सी को मिलेंगे बिकॉज ए ने बिल एंडोर्स सी को कर दिया. तो अब बिल का ओनर कौन बन गया? सी बन गया.
पैसे किसको मिलेंगे? सी को मिलेंगे. सिंपल. एंड लास्ट इज ए कैन सेंड दिस बिल टू द बैंक फॉर collection. To the bank for collection. Now what is that? Say for example 1st of June is the date of maturity. लेकिन A 1st of June को इंडिया में नहीं है. He is not in India. तो he can request the bank, sir, I am giving you bill. Please collect this bill on my behalf on 1st of June from the B because I am not able to go for collection. So he will use bank as a agency. तो बैंक उसके बिहाफ पे जाएगा बी के घर और बिल कलेक्ट करके आएगा. सो दिस आर 4 ऑप्शन जो ए के पास होते हैं. यस, एकदम सही. एब्सोल्युटली करेक्ट. somebody has written absolutely correct these 4 options before I discuss. Thank you guys. So now why these 4 options are important guys? Because as you know कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, the questions are from journal entries only. In this chapter we need to pass journal entries only, right? No big calculations like final account or depreciation or NPO or single entry. No big calculations, but we need to pass various journal entries. And if you don't understand these options, it is not possible to pass journal entries. Okay guys, now let's switch over to the journal entries because it is the most important. Now friend, please concentrate very properly friends. We are starting one of the most important part of this chapter, that is journal entries. Now friends, you will able to understand these entries in a very proper form and proper way when you pass entries in all 3 books simultaneously, right? अगर आप पहले सिर्फ ए के बुक में सीखोगे, फिर बी के बुक में सीखोगे, फिर सी के बुक में सीखोगे तो बहुत टाइम जाएगा और समझ में नहीं आएगा. Therefore I have made this table for you that we will learn the entries in all 3 persons, that is in the books of Mr. A who is drawer, in the books of Mr. B who is drawing, in the books of Mr. C is a endorsee, right? So remember guys, bills are come into picture when there is a relationship between A and B as a debtors and creditors. तो पहले उनके बीच में सेल्स एंड परचेज होगा. Therefore एक भाई साहब को दूसरे भाई साहब को पैसा देना है, राइट? बी को ए को पैसा देना है बिकॉज ए ने बी को सेल किया है. तो ए को पैसा रिसीव करना है, बी को पैसा देना है, तो ए विल ड्रॉ करेगा और बी एक्सेप्ट करेगा, राइट? सो देयर मस्ट बी सेल्स एंड परचेज बिफोर bill is created. Before bill is created. So first entry, A made sale to B, and thereafter A draw the bill and B accept the bill. These are extremely basic entries. I hope you know these entries guys. These are the entries of purchase and sales and bill created. A ने B को सेल किया, B to sale. B ने परचेस किया, परचेस टू ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया. सो याद रहे, फॉर ए इट इज बिल रिसीवेबल, फॉर बी इट इज बिल्स पेएबल. एंड आई कैन once again remind you, bill receivable and bills payable, as I told you guys, it is also in my first slide. You can refer this slide also. I have told you A is a drawer, B is a drawee, for A is a bill receivable, for B it's bills payable, for A is assets, for B is liability, in my first slide only. Right guys, same is here, nothing new, absolutely same. Okay, now as we discuss, B has 4 options. As we discuss, B has 4 options. The first option, A has
A can hold the bill. A has 4 options. A can hold the bill. Hold मतलब वो बिल अपने पास रखेगा, किसी को नहीं देगा. If he hold the bill, right, it means no entry is required. So for holding the bill, no entry is required in any book. Okay. So first you can say NA. No entry is required for holding the bill because he is not giving bill to anyone. ना तो बिल बैंक को देता है, ना तो बिल वो सी को देता है, कुछ नहीं कर रहा है, तो अपने पास रख रहा है. नो एंट्री इज रिक्वायर्ड. सेकंड, अगर वो बिल डिस्काउंट करवा रहा है बैंक में जाके, मान लो कि 10,000 का बिल है, बैंक में जाके उसने डिस्काउंट करवाया 9800 में, बिकॉज बैंक एक आध महीना जल्दी पैसा दे रहा है. इफ बैंक इज गिविंग यू अर्ली मनी, इट मीन्स बैंक विल deduct the discount, right? So what bank will do? Bank will deduct 200 discount and bank will give him 9800. So what entry A will pass? Bank account debit because he is receiving money. Discount account debit because it is expenses. And you can see I have cancelled the BR. The BR in entry number second is close over here. You can see in this PPT. So this BR is cancelled. Why BR is cancelled? Because he is giving BR to bank. Now BR is not with him. So this is the entry, bank discount to BR. It is the entry of discounted with the bank, right? Now third option, when he endorse the bill to C. Now guys, as I told you, A will endorse bill to C. A C को will endorse तभी करेगा जब A को C को पैसा देना है. और A को C को पैसा क्यों देना है? बिकॉज A ने C से परचेज किया है. तो इफ आई वांट टू एक्सप्लेन यू एंडोर्समेंट, देन फर्स्ट आई नीड टू टेल यू दैट देयर शुड बी परचेज फ्रॉम C. सो फर्स्ट एंट्री A, परचेज फ्रॉम C. A purchase from C. So now for A, C is a creditor, and remember, bills are always endorsed to the creditor. A ने C से परचेस किया है, A को C को पैसा देना है, पर पैसों की जगह क्या करेगा? वो बिल एंडोर्स कर देगा. सो फर्स्ट एंट्री A परचेस फ्रॉम C and then A endorse bill to C. So these are the entries, guys. Simple. First entry purchase to C. Second entry C पास करेगा, उसने A को गुड्स बेचा हुआ है, A to sale, and C will ask money from A, but A will say, I don't have money, just keep this BR. So A will transfer, give, endorse BR to C. तो A will pass the entry C to BR. A क्यों BR को क्रेडिट करेगा? बिकॉज उसके पास से BR जा रहा है. C क्यों BR डेबिट करेगा? बिकॉज उसके पास BR आ रहा है. So C will debit the BR, A will credit the BR. Okay, guys? Fine. And last option is A sent BR to bank for collection. जैसे मैंने बताया कि मान लो कि 1 जून ड्यू डेट है. On that day, A is not available, A is not in country, but he need his bill collected from the bank. तो वो B के पास जा नहीं सकता है, तो उसने बैंक को अपॉइंट किया एज एजेंसी कि भैया आप मेरे बिहाफ पे B के घर जाना और पैसा लेके आना. You will present the bill on behalf of me. So what A will do? A will give BR to bank. Okay, अभी पैसा नहीं मिला है, पैसा मिलेगा 1 महीने के बाद एज ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, बट अभी सिर्फ वो BR क्या कर रहा है? बैंक को दे रहा है. So once again, if he is giving BR to bank, he will credit the BR, but he cannot debit the bank account because पैसा अभी मिला नहीं है. Therefore इंस्टीट्यूट ने बोला कि जब तक वो बिल का ड्यू डेट नहीं आता तब तक A कैन नॉट डेबिट बैंक अकाउंट बिकॉज अभी पैसा मिला नहीं. अगर A बिल डिस्काउंट करेगा बैंक से तो ऑन द सेम डे पैसा मिलता है, लेकिन A ने तो बिल डिस्काउंट नहीं करवाया, सेंड फॉर कलेक्शन किया. सो बैंक अभी A को पैसा कोई नहीं देगा. बैंक क्या बोलेगा? भैया मैं 1 जून को B के घर जाऊंगा, B अगर मुझे पैसा देगा तो मैं आपको पैसा दूंगा, तो अभी मैं आपको कुछ देने वाला नहीं हूं. देयरफॉर A विल क्रेडिट BR, वो कंफर्म है बिकॉज BR उसके पास से जा रहा है.
लेकिन ए कैन नॉट डेबिट बैंक बिकॉज आज पैसा नहीं मिलेगा, आज पैसा नहीं मिलेगा, 20 मई को पैसा मिलेगा 1 जून को. Therefore, he will debit the one dummy account which is known as a bill sent for collection. Yes. BSFC, bill sent for collection. Guys, write very clearly, remember very clearly. BSFC is a temporary account which is created just for the stopgap arrangement. 1 जून को ये रिवर्स करना पड़ेगा, पैसे मिले या ना मिले रिवर्स करना पड़ेगा, वो नक्की है. BSFC to BR, BSFC to BR. This is temporary account, stopgap arrangement, which will be reversed on date of maturity. Okay, so guys, these are very basic entries. Now let's move to the as on date of maturity. Please refer the red marks. Now, as on date of maturity, if bill is paid or honored, मतलब अगर 1 जून मेरा डेट ऑफ मैच्योरिटी है तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि 1 जून को बी ने पैसे दे दिए. याद रहे इन एंटायर स्टोरी आप ऊपर देख रहे हो, फर्स्ट 2 एंट्रीज. फॉर बी इट इज बिल्स पेएबल, बी को पैसा देना है. अब किसको पैसा देना है वो डिपेंड करता है वो 4 ऑप्शंस के ऊपर जो आगे हमने सीखे. बट इन दिस बिल इट इज श्योर दैट बी हैज टू पे द मनी. बी इज ए पेयर, बी इज ए पेयर. हु इज पे सर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा है, राइट? तो अब मैं जो समझाऊंगा एक एक करके समझाऊंगा. फाइन, हाउ इट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. ओके, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री. ए ने बिल को होल्ड किया, ए ने बिल को रिटेन किया, मतलब ए ने बिल खुद के पास रखा. अगर ए ने बिल खुद के पास रखा तो ए पे है बिकॉज बिल खुद के पास है, पैसा भी खुद को मिलेगा. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, सर बी को पैसा देना है. बी किसको पैसा देगा? जिसके पास बिल है. बिल किसके पास है? ए के पास है. तो क्या पैसा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा. सो ए के पास पैसा आएगा और बी के पास से पैसा जाएगा. सिंपल. तो ए विल डेबिट द कैश इन बैंक, बी विल क्रेडिट द कैश इन बैंक, ए विल रिवर्स बीआर, बी विल रिवर्स बिल्स पेएबल. वेरी सिंपल, ऐसे लॉजिक से याद रखो. बी पैसा दे रहा है, ए के पास पैसा आ रहा है, ए विल डेबिट कैश इन बैंक, बी विल क्रेडिट कैश इन बैंक, और दोनों रिवर्स क्या करेंगे? अपने बिल को रिवर्स कर देंगे. ओके, जो ऊपर बिल खड़ा हुआ ना, देखो सेकंड एंट्री में ए के बुक्स में बिल रिसीवेबल खड़ा है और बी के बुक्स में बिल्स पेएबल खड़ा है. दोनों बिल को कर देंगे रिवर्स, दोनों बिल को कर देंगे रिवर्स. सो दिस इज द एंट्री. यू कैन चेक इन द कैंसिलेशन पार्ट ऑल्सो. Right, guys? Cash and bank to BR, bills payable to cash and bank. Now, moving further, now we have 3 options remaining. Second, third, and fourth options. Now, be clear. मेहरबानी करके गाइस इसका रट्टा मत मारो, ये बहुत सिंपल एंट्रीज है. लॉजिक से समझोगे तो याद ये रखना है आपको कि बी के बुक में हमेशा एंट्री सेम रहेगी. ये पहला ऑप्शन है. एंट्री का पास की बी ने, बिल्स पेबल टू कैश एंड बैंक. आगे ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर आएगा. चारों 4 ऑप्शन में बी विल पास सेम एंट्री, बिल्स पेबल टू कैश एंड बैंक, बिल्स पेबल टू कैश एंड बैंक, बिल्स पेबल टू कैश एंड बैंक. ओके, बी के बुक में एंट्री चेंज नहीं होती. सो ऑल दिस अदर 3 ऑप्शन बी विल पास द सेम एंट्री. एंट्री किसके बुक में चेंज होगी? ए के बुक में. व्हाई? बिकॉज सर ए ने ऑप्शंस कल्टीवेट की है. नाउ सेकंड ऑप्शन, ए ने बिल डिस्काउंट कर दिया है. अभी बिल किसके पास है? बैंक के पास. बिल किसके पास है गाइस? बैंक के पास, राइट? सो बिल इज विद बैंक. हु विल रिसीव मनी? बैंक विल रिसीव मनी, राइट? सो बी विल पे टू बैंक, नॉट टू दी ए. बी विल पे टू बैंक, नॉट टू दी ए. बी विल पे टू बैंक, नॉट टू दी ए. सो ए विल नॉट पास एनी एंट्री. क्लियर गाइस? In second option, B will pay to bank, not to the A. B will pass same entry. B will pass same entry. A will not pass entry. You can see the second, discount with the bank. A will pass not any entry. B will pass same entry.
क्लियर गाइस? नाउ थर्ड, ए ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया, बिल किसके पास? सी के पास, पैसा किसको मिलेगा? सी को मिलेगा, राइट? सो बी विल पे टू सी, बी विल पे टू सी, नॉट टू दी ए, बी विल पे टू सी, नॉट टू दी ए. So A will not pass any entry because B will pay to C. B will pay to C. Okay. B will pay to C. B will pass same entry. And C will receive money. C will receive money. So C will pass entry bank to BR. Bank to BR. Third option I am showing you. Right? Simple guys. B will pay to C. B will pay to C. So A will not pass any entry. B will pass same entry. And A will not receive money, but C will receive money. So C will pass the entry cash and bank to BR. Okay. And last option, fourth option, A ने बिल कलेक्शन के लिए दिया है बैंक को. So bank will ask money from B. B will pass same entry. If B will pay to bank, bank will pay to A. So here A will receive money, but bank may charge some bank charges, right? So now A will receive money, therefore he will debit cash and bank. He will debit charges also, and he will not credit BR. Why? Because see this entry, guys. See, when he has sent bill for collection in previous slide, what account he has debited? He has debited BSFC. So now he will credit this BSFC. Write very clearly, remember very clearly, BSFC is a temporary stopgap account created as on date of when A sent bill for collection. As on date of maturity, this BSFC should be reversed. BSFC should be cancelled. BSFC should be credited. So A will credit BSFC and he will debit cash in bank and he will debit bank charges. This BSFC will be reversed. This BSFC will be reversed as on date of maturity. As on date of maturity. As on date of maturity, guys. See. Clear, guys? This BSFC reversed. He will receive 9900 and bank will deduct 100 rupees charges. So when you give bill for collection, you have debited BSFC. This is now credited. Cancel, because now this BSFC has been cancelled because we are receiving money. So BSFC will be credited, cash and bank debited, and charges my expense will be debited. Okay. Now, very next important part, if bill is dishonored. Guys, अभी जो हमने बातें की ये एंट्रीज में वो बात की कि सर सब कुछ गुड़ी गुड़ी हो रहा है, ऑल इज वेल, बी पैसा दे रहा है, वी आर ऑप्टिमिस्टिक. बट नाउ इफ बी डिड नॉट पे द मनी, इट मीन्स बिल इज डिसऑनर. Bill is dishonor. Then what? See, guys, refer the first column, red color mark. Now on date of maturity, if bill is not paid, it means bill is dishonored. Bill is not paid, bill is dishonored. Now, friend, before moving entries, one important point will be now in picture, which is known as a noting charges. Before starting the entries, we will have to understand the noting charges. Now, what is noting charges? When bill is dishonored, sometime A appoint one government officer who will present the bill, and if bill is dishonored, he will record the fact of bill dishonored. He will record the, yes, registrar, perfect. He will record the fact and he will write on back side of bill, भाई साहब ये बिल क्यों डिसऑनर हुआ?
बिकॉज बी ने पैसा नहीं दिया. बी इज अ पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर. देयरफॉर ए का पैसे लेने का हक अभी जिंदा है. ए की सेफ्टी है भाई. बी उस दिन बारगाम चला गया, उसने पैसे नहीं दिए, वो बोलेगा बी ए को बोलेगा भाई तो आया ही नहीं मेरे वहां. तो ए अपनी सेफ्टी के लिए भाई साहब को बीच में रखेगा. हु इज नोन एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल. ही विल रिकॉर्ड द फैक्ट, ही विल रिकॉर्ड द रीजन फॉर डिसऑनर, साइन एंड सील करेगा, उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे. दैट इज नोन एज ए नोटिंग चार्जेस. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा एंड नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा. ध्यान से गाइस, बहुत दोनों में फर्क है. ध्यान से. नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? होल्डर ऑफ बिल. हु इज होल्डर ऑफ बिल? सर, डेट ऑफ मैच्योरिटी के दिन जिसके पास बिल होता है ना सर, मतलब पेई. पेई जो होगा, पेई जिसको पैसा मिलने वाला है, वो भाई साहब नोटिंग चार्जेस पे करेंगे. तो बेयर कौन करेगा? सर हमेशा बी करेगा. वाई बी विल बेयर ऑलवेज दिस नोटिंग चार्जेस? सर बिकॉज बी इज अ कल्पिट. B did not pay the money, that's why bill is dishonored. Therefore always, always, always noting charges नाम का शब्द ध्यान से गाइस लिख देना गाइस. ओके, नोटिंग चार्जेस नाम का शब्द, नोटिंग चार्जेस नाम का एक्सपेंस, खर्चा हमेशा ड्रॉई के बुक में डेबिट होता है. सो जब हम एंट्री सीखेंगे नीचे वाली, तो नोटिंग चार्जेस ऑलवेज ऑलवेज विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ बी. ए, सी एंड बैंक will pay the noting charges. Pay, not bear. Pay the noting charges, but they will recover from B eventually. So आपको याद क्या रखना है लॉजिक गाइस? याद लॉजिक क्या रखना है? नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस will be always debited in the books of B. A, C and bank will credit cash and bank when they pay the noting charges. They will not use the word noting charges because this is not their expenses. So this, remember very carefully friend. Noting charges, read the properly the word which are red mark. Such charges always paid by. Paid by क्या लिखा है? Paid by, not bear by. Paid by, pay. That is holding of bill. That is either A or C or bank who are the holder of bill. But this is always recovered from, thereby expense of B. Remember this two line very carefully guys. रट्टा नहीं मारना है, कुछ नहीं होने वाला रट्टा मारने से. एंट्रीज का रट्टा मारोगे खो जाओगे एग्जाम में. Remember the concept. Noting charges is always expense of B. So therefore in entry, B will always debit noting charges. A, C and D will not use word noting charges. They will use the word cash and cash. उन्होंने कैश में पे किया है. रिकवर किससे करेंगे? बी से करेंगे. Got it guys? And now let's see the entries. Now you will find entry very simple. Now guys, 10,000 का बिल है. बिल हो गया डिसऑनर. बी ने पैसा नहीं दिया. बी ने पैसा नहीं दिया, बिल हो गया डिसऑनर. राइट? और मान लो कि 100, 200, 500 जो भी नोटिंग चार्जेस लगा. नाउ फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप एंट्री सीख रहे हैं. लिख देना. सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे, कुछ नहीं लिखोगे अपनी बुक में, तो कुछ नहीं होने वाला. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सर का पीपीटी देख लिया, 2 बार पीपीटी देख लिया, 4 बार वीडियो देख लिया, कुछ नहीं होगा फ्रेंड. ये अकाउंट से लिखना पड़ेगा. यू हैव टू राइट द कंसेप्ट्स. You can take a screenshot, you can see the lectures from video lecture from my recorded lecture, it is okay. But if you don't write it concept, there is no meaning of this 2 hours. Okay, at least you need to write the concept. Okay, so first important concept number 1, write it. First important point. First, here also B will pass same entry.
रिपीटिंग वंस अगेन, जब आगे बी ने पेमेंट कर दिया था, बिल वॉज ऑनर्ड, बिल वॉज पेड, बिल वॉज ऑनर्ड, बिल वॉज पेड, तो मैंने सिखाया था बी विल पास सेम एंट्री। यहां भी वही बोल रहा हूं, बी विल पास सेम एंट्री इन फॉर ऑल दिस फोर ऑप्शंस, बी विल पास सेम एंट्री। व्हाट एंट्री बी विल पास? सिंपल, ये जो ब्लू करके दिखाया ना आपको, इस एंट्री को रिवर्स करने के देखो एरो किया हुआ है। व्हाट एंट्री बी विल पास? बिल्स पेबल टू ए। He will just reverse the bill. He will cancel the bill because he is not going to pay it. So what entry we will pass? Bills payable to A. Bills payable to A. Bills payable to A. Simple. But if there is a noting charges, then he will pass the entry. Bills payable debit, noting charges debit, and A account credit. So what you need to remember? Two things very carefully. We will reverse the bill. जिस एंट्री से बिल का बर्थ हुआ है, जब ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया, तो ये एंट्री हमने पास की थी, उस एंट्री को रिवर्स करना है। सिंपल, उस एंट्री को रिवर्स करना है। सो बी विल पास एंट्री बिल्स पेबल टू ए। जिस एंट्री से बिल का बर्थ हुआ उसकी बुक में, उस एंट्री को रिवर्स करना, बिकॉज बिल का पैसा देने का नहीं है, बिल शुड बी कैंसल। बट इफ नोटिंग चार्जेस, then B will pass final entry. I'm telling you, final entry in the books of B, bills payable debit, noting charges debit, and A's account credit. And this entry will remain same in all four options. Right, guys? What entry A will pass? Now see the first entry in the books of B. Bills payable debit, noting charges debit, A's account credit, 10,100. Simple. Now what A will do? A will do the same thing. वो भी ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स करेगा। यस, एरो देखो, आप एरो देखो। जब ए ने बिल ड्रॉ किया, जब ए ने बिल ड्रॉ किया तो क्या एंट्री पास की उसने? बी आर टू बी। जिस एंट्री से बिल का बर्थ हुआ उस एंट्री को रिवर्स करेगा, बिकॉज पैसे मिलने वाले नहीं है। मतलब एंट्री होनी चाहिए बी टू बी आर, बी टू बी आर। लेकिन समझाया था कि नोटिंग चार्जेस नाम का वर्ड सिर्फ बी के बुक में आएगा। ए सी एंड डी नोटिंग चार्जेस नहीं लिखेंगे, उसकी जगह कैश लिखेंगे, बिकॉज ए उसको पे करेगा, लेकिन कलेक्ट किससे करेगा? बी से करेगा। देखो 10,000 का बिल था, लेकिन कितना पैसा मांग रहा है वो? 10,100। ओके, ए बी से कितना पैसा मांग रहा है? 10,100। क्यों सर? 10,000 बिल का एंड 100 नोटिंग चार्जेस का। So total amount will be payable by B to A. B to A now, not 10,100. It will be 10100 because A has paid noting charges which will be eventually recovered from the B. Clear friend? Okay? Doubt बाद में सॉल्व करेंगे, but this is way in which you should remember. जिस एंट्री से बिल का बर्थ हुआ उस एंट्री को रिवर्स करो। नोटिंग चार्जेस नाम का शब्द बी लिखेगा, एसीडी कैश लिखेंगे, बात खत्म। ओके, नाउ सेकंड, डिस्काउंट विद द बैंक। डिस्काउंट विद द बैंक। ओके, डिस्काउंट विद द बैंक। याद रहे कि बी विल पास सेम एंट्री। सी यू कैन सी बी विल पास सेम एंट्री, बी विल पास सेम एंट्री। What entry A will pass? Now write one more rule. Write one more rule very clearly, guys. I am telling you, write one more rule very clearly. In all these four options, B will always, A will always debit B's account. B will pass same entry, खत्म हो गई बात। But all these four option, in all these four option, A will always debit B's account. So देखो, पहले भी A ने B को डेबिट किया था, अभी भी मैं क्या बोल रहा हूं? A B को डेबिट करेगा 10100। क्रेडिट किसको करेगा? सर बैंक को करेगा। क्यों बैंक को करेगा? सर बैंक को पैसा देना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। बैंक वाला थोड़ी राह देखेगा, बैंक वाला बी के पास जाएगा, बी पैसा नहीं देगा, बैंक वाला तुम्हारे घर पे आएगा, एक ही घर पे आएगा, बोले भाई पैसा दो, बी ने पैसा दिया नहीं है।
So A has to immediately, remember the words very clearly. A has to immediately A has to pay to bank. So A will pay to bank, but he will receive from the B. B से पैसा मिलने का बाकी, बैंक को पैसा देना है, एंटी पास करेंगे बी टू बैंक. ओके, याद क्या रखोगे? याद क्या रखोगे? ए विल ऑलवेज डेबिट बी. A will always debit B on these four options. A will always debit B in these four options. पहले ऑप्शन में डेबिट किया, देखो. सेकंड में डेबिट किया, देखो. अब तीसरे में एंडोर्स वाला ऑप्शन. वन सेकंड ए ने बी को डेबिट किया. क्रेडिट किसको करेगा? सी को. क्यों सर? बिल सी के पास है, बात खत्म हो गई. आगे वाले ऑप्शन में बिल बैंक के पास था, तो मैंने बी टू बैंक किया. अभी बिल किसके पास है? सी के पास है, तो मैं बी टू सी करूंगा. एंड बी विल पास सेम एंट्री. बी विल पास सेम एंट्री. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंट्री बी टू सी? ए के बुक में बी डेबिट सी क्रेडिट. सर बी मेरा डेटर है, सी मेरा क्रेडिटर है. बी से पैसा मिलने का बाकी, सी को पैसा देने का बाकी. I will receive money from B, I will pay to C. Yes, B to C, B to C, B my debtor, C my creditor. Clear? And last entry, BSFC. BSFC. 1 second he will debit B. 1 second he will debit B. Now what he will credit? BSFC. सिखाया था आपको. BSFC is a stopgap arrangement. And he has to credit BSFC. So B will debit BSFC credit and cash. बिकॉज 100 रुपीज उसने पे किया, वो रिकवर करने का बाकी है. सो बी टू BSFC टू कैश. बी टू BSFC टू कैश. सो बी से पैसा लेना है 10,100. BSFC को रिवर्स कर दिया और 100 रुपीज कैश ए ने पे किया. क्यों पे किया? बिकॉज सर बैंक वाला ऐसे मांगेगा, भाई तेरे बी ने पैसा नहीं दिया लेकिन 100 रुपया मैंने खर्चा किया, मेरा पैसा दे दे. सो ही विल हैज टू पे टू बैंक 100 रुपीज अंडर नोटिंग चार्जेस. But he will not use the word noting charges. He will use the word cash. Cash. So guys, what you need to remember? What you need to remember? Remember, in B's book, always entry remain same. In B's book, always entry remain same. Bills payable debit, noting charges debit, A's account credit. In A's book, B always debit. In A book, B always debit. What will be credited? सर पहले ऑप्शन में बिल खुद के पास है, इसलिए BR. दूसरे ऑप्शन में बिल बैंक के पास है तो बैंक. तीसरे ऑप्शन में बिल सी के पास है तो सी. एंड चौथे ऑप्शन में BSFC तो BSFC. नो नीड ऑफ मगअप, नो नीड ऑफ रट्टा मारिंग, नो नीड. कोई जरूरत ही नहीं है भाई. ए डेबिट किसको करेगा? बी को करेगा. चारों चार ऑप्शन में, बात खत्म. क्रेडिट किसको करेगा? सर बिल जिसके पास है. बिल किसके पास है? सर पहले ऑप्शन में मेरे पास है, मतलब BR. दूसरे ऑप्शन में बैंक के पास है, बैंक. तीसरे में सी के पास है, सी. चौथे में BSFC करवा, BSFC. खत्म. इसमें कहां रट्टा मारने की जरूरत है? इट्स एब्सोल्युटली लॉजिकली, absolutely logically guys. And these are the entries you are supposed to write in your exams. Okay, so now these entries, the next important point is renewal and retirement. Renewal and retirement. Now what is the concept? What is renewal? The name itself suggests, sir, old will be cancelled and new bill will be generated. Say for example 1st June को bill date of maturity, on 1st June date of maturity, B will request to A, यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, can you help me? A बोलेगा what is the problem? B बोलेगा यार थोड़ा पैसों का थोड़ा इशू है, फाइनेंशियल कंडीशन बराबर नहीं है, I need 1 more month to pay you your dues. Please, extend the time by 1 month. A will say, okay, no issue, fine. So I will help you. You don't pay me on 1st of June, right? But you pay me on 1st of July. No issue. Okay, I will extend the bill by 1 month. But the same bill cannot be extended because the bill was supposed to mature on 1st June. The same bill cannot be extended. Therefore, we need to generate a new bill. So what we will do, you can read in the PPT also. Old bill will be cancelled, new bill will be generated with an extended period.
ना जाहिर सी बात है कि ए अगर बी को एक्सटेंशन दे रहा है 1 महीने का, देन ए विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम बी, वॉट एवर अनपेड अमाउंट इज देयर, राइट? नाउ ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि 1 लाख का बिल है, बी ए को ऐसा रिक्वेस्ट करेगा, सर एक काम करो 50% ले लो एंड 50% के लिए नया बिल दे दो। सो व्हाट इज अनपेड अमाउंट? ओनली 50,000। से फॉर एग्जाम्पल 60-40, बी बोलेगा सर 60 ले लो, 40 के लिए नया बिल दे दो, तो बी विल पे 60 टू ए। नाउ व्हाट इज अनपेड? 40,000। तो लॉजिक की बात है कि ए विल चार्ज इंटरेस्ट ओनली ऑन दिस 40,000, राइट, विच इज अनपेड अमाउंट. So here there is an option given by the government or law to the B. अगर आपके पास पैसा है तो आप पे कर दो, रिमेनिंग के लिए नया बिल आएगा, और जितना रिमेनिंग होगा, जितना आउटरिंग होगा, जितना अनपेड होगा, उसके ऊपर ये क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा. दिस इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल. ओके, ओल्ड बिल विल बी कैंसल, न्यू बिल विल बी जनरेटेड, एंड वॉट एवर अनपेड अमाउंट इज देयर. अगर मानो कि बी बोलेगा सर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पूरा का पूरा 1 लाख बाकी रहेगा, हाँ, देन ही विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन 1 लाख रुपीज, right? Because he has nothing paid. So whatever unpaid, he will charge interest. He will draw the new bill. We will accept the bill. Story khatam. It is known as renewal. It is known as renewal. Now, exactly opposite of renewal, that is called retirement. That is called retirement. Now, what is retirement? It is exactly opposite of renewal. Renewal में बी ने वक्त मांगा था, सर मुझे 1 महीना और दो. यहां भी बोल रहा है सर बहुत पैसे हैं, पैसों की कमी नहीं है सर, बहुत पैसे हैं. ओके, मैं आपको 1 महीना जल्दी पेमेंट कर दूंगा. फाइन. तो जाहिर सी बात है, इफ बी विल पे 1 मंथ अर्ली, देन ही विल expect a discount from the A, and whatever percentage decided by them, A will give discount. Here the discount is known as rebate, right? So A will give rebate to the B, so B उतना पैसा कम देगा. मान लो कि 1 लाख रुपए का बिल है, बिल ड्यू हो रहा है 20 जून को, 20 जून को. बी आज पेमेंट करेगा ए को, 20 मई को. पैसे उठाओ, बहुत पैसा है, लेकिन अगर मैं आपको 1 महीना जल्दी पैसा दूंगा, देन यू हैव टू गिव मी 1 मंथ रिबेट. एंड से फॉर एग्जाम्पल 1,000 का रिबेट उसको मिला. सो नाउ बी विल नॉट पे 1 लाख एंटायर अमाउंट, बी विल पे 99,000. सो A will offer discount to B, which is known as rebate. So 1,000 is an expense for A, and it is income for B. For B, because A will receive less amount and B will receive that discount. So B will pay less amount, A will receive less amount. Retirement is nothing but exactly opposite of renewal. And insolvency. As you know, friend, insolvency is a situation where A will ask money from B, but B will not able to pay it. Even B will not renew the bill. B will say to A, sir, financial position is very bad. Sorry, but I am declared as a bankrupt or insolvent. So I will not able to pay you entire amount. Now government will take the charge. They will sell my assets, and whatever available with my assets, they will pay you, but you will not get full amount. So now, friend, important point is that in retirement, please remember 2 points. If possible, write it. In my detailed session, I have explained with example, right? You can refer my recorded lecture on the BOS site. I have explained with super duper examples. But here in summary session, you have to write it if you want to match with the recorded lecture. In insolvency, very important 2 points, very important 2 entries. First entry, bill will be reversed. First entry, bill should reverse.
Why bill should reverse? Sir, I need to cancel the bill. पैसा नहीं मिलने वाला है सर. First entry, bill should be cancelled. And second entry, party should be cancelled. Why party should be cancelled? आपको पता है कि जब बी हो जाएगा इंसॉल्वेंट तो ए क्या करेगा? अपनी बुक में बी का अकाउंट जीरो करेगा. एंड बी क्या करेगा? अपनी बुक में ए का अकाउंट जीरो करेगा. राइट? सो दे विल बोथ कैंसल ईच अदर अकाउंट in each other book, and A will receive less money, B will pay less money. So जो पैसा A को कम मिलेगा, as you know वो bad debts है, और जो पैसा कम B देगा, as you know उसका नाम होता है deficiency account. So say for example 1 lakh rupees है, A ने 60 पे किया, 40 पे नहीं किया. ओके, तो A के पास 60 आया, तो A will debit 60 in a cash and bank, and 40 he will debit in bad debts. And B ने 60 पे किया, 40 पे नहीं किया, तो B will credit 60 in cash and bank, and B will credit this 40 not in bad debts. Bad debts नाम का expenses और loss बुक्स A में होता है. B के बुक्स में bad debts यूज नहीं होता, बिकॉज उसको तो क्रेडिट करना है. तो A will debit bad debts, but B will credit not bad debts, but the new account is known as a deficiency account. So whatever amount not paid by B to A, which is the bad debts in the books of A, which is known as a deficiency in the books of B, it is in insolvency. It is in insolvency. Now guys, calculation of due dates. As you know guys, there are two types of bill: bill after date and bill after sight, as you can see in this PPT very clearly. If it is bill after date, you should start calculation from date of drawing. If it is bill after sight, you can start the calculation from date of acceptance. And 3 days extra should be added, then you will get the date of maturity. So it's a very simple concept: bill after date, bill after sight. If you are given bill after date, you should start calculation from date of drawing. If you are given bill after sight, you should start from date of acceptance. Okay, say for example 1 जून को बिल ड्रॉ किया, 3 महीने का बिल है, तो 1 जून प्लस 3 महीने 1 सितंबर प्लस 3 दिन 4 सितंबर. आंसर विल बी 4th of September. ओके, अगर बिल आफ्टर साइट है तो 1 जून को ड्रॉ किया, 2 जून को एक्सेप्ट किया, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2 जून, नॉट 1 जून. Date of drawing and date of acceptance, yes. And last you should add 3 days of grace and you will get the answer. Now friend, एक और कंसेप्ट होता है ऐसी, यहां मैंने लिखा ग्रीन, देखो ग्रीन बिल आफ्टर साइट है, बिल आफ्टर डेट एंड बिल आफ्टर साइट. एक और कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है बिल एट साइट. ओके, बिल एट साइट मतलब कि ऐसा बिल जिसमें पीरियड नहीं लिखा है. तो बहुत सिंपल सी बात है, पीरियड ही नहीं लिखा है, ना महीने ना डेज. तो दिस बिल एट साइट का मतलब होता है बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट इमीडिएटली. इमीडिएटली इट इज एक्सेप्टेड बाय बी. ए ने, मान लो कि आप ए हो, मैं बी हूं, आपने मेरे पर बिल ड्रॉ किया आज 20 मई को, आपने उसमें कोई पीरियड लिखा ही नहीं. ओके, अब मैंने बिल पढ़ा, मैंने पढ़ा कि भाई यू हैव ड्रॉन द बिल ऑन मी 1 लाख रुपीज 28th मई, सब कुछ बराबर है, साइन सील, गवर्नमेंट सील, सब कुछ डेट सब कुछ. बट आपने उसमें 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 45 डेज कुछ लिखा नहीं, मतलब पीरियड इज नॉट मेंशन. फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं. इसका मतलब ये कि आपने मुझे 1 दिन का भी क्रेडिट पीरियड दिया नहीं है,
फिर भी मैं बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मतलब मैं मेंटली रेडी हूं कि जब आप पैसा मांगोगे मैं आपको पैसा दूंगा, मतलब मेरे पास पैसा रेडी है. सो बिल एट साइट मीन्स period is not mentioned, right? And you ask me money and I have to pay you. So bill at site is a bills payable on demand. Bills payable as and when drawer need. तो ड्रॉवर किंग है, वो जब चाहे पैसा मांगेगा बी को देना पड़ेगा, बिकॉज ए ने बी को कोई पीरियड दिया नहीं. इट इज नॉट ए बिल एट साइट. और जाहिर सी बात है बिल एट साइट में पीरियड नहीं लिखा होता, पीरियड इज नॉट मेंशन, देयर वर नो पॉइंट ऑफ गिविंग 3 days. Logically, right? Okay, so remember guys, bill after site is a different story, bill at site is a different story. Okay, and next is, अगर आपका ड्यू डेट मान लो अभी मैंने बताया कि 1 जून प्लस 3 महीना, 1 सितंबर प्लस 3 दिन 4 सितंबर, ये एग्जांपल दिया. अब 4 सितंबर को अगर हॉलीडे छुट्टी आ रही है, देन व्हाट, देन 4 सितंबर विल चेंज, राइट? अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे है तो गवर्नमेंट हॉलीडे है तो बैंक हॉलीडे है. दिस आर दी हॉलीडेज जो सरकार ने नक्की की है. 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 अप्रैल से बैंक हॉलीडे, 2 अक्टूबर से गांधी जयंती एंड ऑल संडे. अगर आपका आंसर डेट ऑफ मैच्योरिटी ये 5 दिन में आता है, देन एज पर गवर्नमेंट रूल वी नीड टू टेक प्रीवियस डे, प्रीसीडिंग डे, पहले का दिन. मतलब 15 की जगह 14, 26 की जगह 25, फर्स्ट की जगह 31, सेकंड की जगह 1 अक्टूबर, संडे की जगह सैटरडे will be the new date, will be the new date. Done? Okay, will be the new date. अगर पब्लिक हॉलीडे है तो, अगर वो सडन हॉलीडे है, अचानक कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई, देन वी नीड टू कंसीडर दी नेक्स्ट डे, जिसका मतलब होता है फॉलोइंग डे. नेक्स्ट डे का मतलब होता है फॉलोइंग डे. सो इफ इट इज ए पब्लिक हॉलीडे, previous day, sudden, it will be next day. And last is accommodation bill. The last is accommodation bill. Now remember guys, accommodation bill, the first important point is there is no sale, there is no purchase. This is a special type of bill in which ए और बी के बीच में कोई सेल परचेज होता नहीं. नो सेल, नो परचेज, नो डेटर्स, नो क्रेडिटर्स, नो एसेट, नो लायबिलिटी. देन व्हाई दे आर ड्रॉइंग द बिल? नाउ गाइस, इफ you see the entries in which we have started the first slide, the first slide of the entries, शुरुआत कहां से की? देखो आप, शुरुआत यहां से की थी हमने. सी, ए क्रेडिट सेल टू बी एंड देयरफॉर ए ड्रॉ द बिल एंड बी एक्सेप्ट द बिल. इसके बाद की पूरी कहानी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, रिन्यूअल, ओनर, डिसऑनर, दीज द व्हाटएवर, सबके बेस में क्या था कि ए ने सेल किया और बी ने परचेस किया. दे हैव relationship of debtors and creditors. But now this is the last and final shade PPT which says that they don't have sales and purchase, even though they write the bill and accept the bill. अगर उनके बीच में सेल परचेस नहीं है तो फिर क्यों बिल ड्रॉ कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू सेटिस्फाई देयर फाइनेंस नीड. नाउ एज यू नो गाइस, क्या होता है, मानो कि ए बिल बी के ऊपर ड्रॉ करता है, ए ड्रॉवर है, बी ड्रॉई है. ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया. ए बैंक पे जाके बिल डिस्काउंट करवा देगा, बी उसको
एक्सेप्ट करेगा, ए बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करेगा, बैंक उसको पैसा देगा। अब ए के पास जो पैसा आया, वॉट एवर मनी ए रिसीव्ड, whatever money A received, whatever money A received, it is not A's money. It is a money jointly of A and B. And therefore, you will be given a ratio in the question. Say, for example, ratio is 60 and 40. And money received is 90,000. Okay. Then this 90,000 will be divided between the A and B in the ratio of 60%, 40%. So 54,000 will be taken by A and 36 will be taken by B. This is called finance arrangement, and this is known as an accommodation. So in accommodation, you need to remember two things. First, whatever money received, share by A and B in an agreed ratio, and whatever discount also will be shared by A and B in a same ratio, as I have mentioned in my PPT. And the last point is, then second bill will come into picture. But when second bill will come into picture, when first accommodation bill cannot be paid by B, then second bill will come into picture. And आपके पास जो मॉडल में 2-3 सम है वो सेम टाइप के सम है, कुछ नया नहीं उसमें. Okay, so guys, this is a brief about the bills of exchange. About the bills of exchange. Then now we will start BRS same way, and then we will have a question and answer as madam suggested. Then we will have a question and answer. So just 2 minutes guys, let me share the PPT of BRS. Just a minute guys, so then we will start. Okay guys, now first of all, as you know, BRS is a statement. Okay, BRS is a statement, and therefore you can see it is prepared on particular date. On a particular date. Balance sheet is a statement. Trial balance is a statement. Therefore, they are prepared on particular date. Okay. BRS कौन प्रिपेयर करेगा? अकाउंट होल्डर, that is businessman, that is हम. Purpose क्या है? As you know, the purpose is to reconcile difference between the bank column of cash book and passbook. That is bank statement. Now, this is very important format of bank column of cash book, which is prepared by the businessman. Now guys, let's start with the debit side. See, in debit, you have a opening balance. Remember, generally, opening balance is on debit side. And when opening balance is in debit side, it is known as a favorable balance, positive balance, or a balance. Or a balance. If
opening balance is negative, then it will be on credit side. As you can see in screen, it is known as a credit balance or unfavorable or negative or overdraft. Now, what are black mark works are there? जो black से लिखा हुआ है, these are your receipts and payment. Receipts and payments. All receipts will be on debit side. All payment will be on credit side. This is your bank column of cash book. This is your asset. The rule is debit whatever comes in, credit whatever goes out. आए तो उधार, जाए तो जमा. ये हमारे बेसिक रूल्स. सो यू कैन सी ऑन डेबिट साइड गाइस. और गाइस रिमेंबर, ये पूरे चैप्टर में, बीआरएस के पूरे चैप्टर में अगर आपको साइड समझ में आती है, साइड, तो चैप्टर डन है. लेकिन अगर आपको साइड समझ में नहीं आती तो ये चैप्टर कभी नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज सिंपली अबाउट द दिस एंट्री विल बी ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक एंड विच साइड ऑफ पासबुक. और इसमें कोई लंबा रॉकेट साइंस नहीं है. वेरी सिंपल थिंग्स आर देयर. whatever income, whatever receipts will be in debit side of cash book, and whatever payment and whatever expense will be on credit side of passbook, credit side of cash book, and then it will be opposite in passbook. Very simple. So let's see the debit side. Check deposited, it's a income. Check collected, income. Bill receivable, अभी सीखा, पैसे आ रहे हैं, it is income. Check paid into bank, it is same as check deposited, income. Bill discounted, अभी सीखा हमने, अगर बैंक से बिल डिस्काउंट करेंगे तो पैसे हमारे खाते में आएंगे, इनकम. इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, टैक्स रिफंड रिसीव्ड, इट्स ए इनकम. कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट चेक इन अवर अकाउंट. अब तो बहुत इजी हो गया है, आज के जमाने में सीबीएस हो गया बैंक. कहीं से भी, मैं यहाँ अहमदाबाद में हूं, आप वहां किसी और सिटी में हो, वहां से वो कैश डिपॉजिट करेगा एसबीआई में, मेरे खाते में आ जाएगा. सो इट इज वेरी मच इजी नाउअडेज, राइट. अब तो ऑनलाइन पेमेंट भी इजीली हो गया है. तो इन शॉर्ट, कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिट इन माय अकाउंट, इट इज ऑल्सो माय इनकम. नाउ लेट्स मूव ऑन क्रेडिट साइड. चेक इश्यूड मतलब चेक गिवन, check drawn, check written, this all I have given check to someone, so मेरे बैंक से पैसे जाएंगे, it will be on credit side. Bills payable paid, my expense, my payment. Bank charges, my expense. Bank interest, loan interest, my expense. Bill dishonored, bank will deduct the money. Check dishonored, bank will deduct the money. All expenses, LIC loan installment, LIC premium, electricity premium, mobile bill paid, tax bill paid, simple सी बात, it is all my expenses. And then there is a closing balance. So you can see the blue opening balance versus blue closing balance. एकदम क्रॉस में है ये, right? You can see. So opening debit, closing debit, रेड वाला है वो opening credit and closing credit. So the way in which opening may be balance or overdraft, closing also can be bank or overdraft, मतलब balance or overdraft, which will be given in question also. Now passbook format is exactly opposite of this. Passbook format is, as you know, exactly opposite of this. Now, this is passbook. Passbook has a 5-6 column. Now, passbook debit and passbook credit. Now, what is passbook debit? See here, once again, cash book. All receipts, all income are on debit side. And all payment, all expense are on credit side. Now in passbook, the sides are different.
right? See, all expenses, all payment are on debit side, and all deposits, all income are on credit side. So whatever this debit side, check deposit, check collected, all this debit side will be here on credit side. And whatever credit side, check issued, check drawn, check return, bills payable, bank charges, interest, loan, torrent bill, electricity bill, tax paid, whatever are on credit side of cash book are on debit side of passbook, are on debit side of passbook. Both are absolutely opposite of each other. Now, friend, when we are talking about BRS, we should understand two more important things apart from format. The first is what is the starting point and ending point of BRS. As you know, if you start the BRS as per cash book, then you need to end it as per passbook. If you start as per passbook, naturally you will end as per cash book. Now, as we discuss, there may be balance or overdraft. Now, see once again, जो आगे सिखाया था आपको ये रहा, ये आपका कैश बुक है. डेबिट साइड, रिसिट साइड, favorable side, debit balance. So debit balance is always balance. And red, it's a credit side, overdraft. See, opening balance blue वाला debit balance है, वो balance है. Opening balance red वाला जो है वो overdraft. मतलब if कैश बुक में अगर बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है तो डेबिट है, और अगर कैश बुक में बैलेंस की जगह ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट है. और मैंने शुरुआत यही लिखी है, सी, बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज डेबिट एंड ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज ऑलवेज क्रेडिट. सिंपल. बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज डेबिट एंड ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज ऑलवेज क्रेडिट. ऐसा ही यहां मैंने ड्रॉ करके दिखाया. ओपनिंग बैलेंस डेबिट मतलब बैलेंस, एंड बैलेंस क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट, और वही आगे लिखा हुआ. सिंपल. एंड अभी सिखाया पासबुक बिल्कुल ऑपोजिट है. यहां लिखा है नीचे लास्ट लाइन, द पासबुक इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कैश बुक, द लास्ट लाइन. यहां भी ऐसा ही लिखा है मैंने. ओके, एज पर पासबुक इट इज ऑपोजिट. बैलेंस एज पर पासबुक इज ऑलवेज क्रेडिट and overdraft as per passbook is always debit. So guys, this four are your starting point or your ending point. If you start with any one, you have to end with any other. इसके अलावा कोई और ऑप्शंस पूरे चैप्टर में अवेलेबल नहीं. So this four are your either starting point or ending point. Okay. Rules of BRS. Just two small rules of entire chapter. First, do what is not done. Debit or credit. जो नहीं हुआ है वो करो. मतलब कि अगर डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट करो, क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट करो, जो नहीं हुआ है वो करो. एंड सेकंड, rectify the errors. There may be side mistake, there may be amount mistake, there may be side plus amount mistake, there may be carry forward mistake, there may be undercast, there may be overcast, right? So rectify the error. जो भी error है, पूरे चैप्टर में दो ही रूल है, यही करना होता है. If it is omission, अगर एक जगह लिखना भूल गए तो आप लिख दो, और if it is error तो उसको रेक्टिफाई करो. Other than this, no options are there.
Now, there are two types of question which is part of this chapter. First, when cash book and passbook are given, when cash book and passbook are not given. If cash book and passbook are given, then there are two options. Either these both are given of same month, or otherwise they are both are given of different months. If cash book, passbook are given, then either may be of same month or maybe of different months. Okay. If same month are given, if cash book, passbook are same month are given, can you start the BRS? अभी सिखाया as per balance OD, as per cash book. But remember the point, you need to compare both the side and you need to have a uncommon entries and adjacent BRS. So if you remember in that way, if month are same, then entries means if month are common, entries to be considered uncommon. मतलब कि जो एक जगह पर है और एक जगह पर नहीं है, कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है, या तो पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं. So remember carefully guys, if month are same, if month are common, then take uncommon or mismatch entries. Yes. Okay. But if, next slide, if month are uncommon, then consider common entries. जो दोनों में है, जो दोनों में है, it will be part of BRS. Okay. So if month are common, month are same, take uncommon entries. If month are different, मतलब month are uncommon, consider the common entries in the BRS. दोनों का एक एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में. कॉमन मंथ का भी एक इलस्ट्रेशन दिया है, अनकॉमन का भी एक दिया है, which is your illustration number 9. Illustration number 1 is regarding common months. Illustration number 9 is regarding अनकॉमन मंथ्स. दोनों आपके मॉडल में एक एक दिए हुए हैं. बट कंसेप्ट ये है कि जब मंथ कॉमन है तो एंट्रीज अनकॉमन लेनी है, और जब मंथ अनकॉमन है, मिसमैच है, अलग अलग है, तो एंट्रीज कॉमन लेनी, एंट्रीज कॉमन लेनी. And the next point is when cash book and passbook are not given. अभी हमने आगे जब शुरुआत की गाइस, सी हियर there are two types of question what we understood. First, when cash book, passbook are given, either same month or different months. And दूसरा, when cash book and passbook are not given. Generally second type के question पूछते हैं when cash book and passbook are not given. If cash book and passbook are not given, friend, okay, it means errors and reason of differences will be given. It means error and reason of differences will be given. Means you will be given 8 error, 10 error, 5 error, and you need to prepare the BRS. You need to prepare the BRS. Now, there are some common errors. There are some common error. There are 5 to 7 common error which will be part of BRS. If you just read this 5 to 7 errors, right, then you will understand entire chapter. There are 5 to 7 error only, and this error are also given your module as well as I have also given. But वहां से पढ़ेंगे मॉड्यूल में से तो बेटर रहेगा, बिकॉज मैं आपको ड्रॉ करके समझा सकता हूं, राइट. देन लेट्स मूव टू दी अवर मॉड्यूल.
Okay, guys, I hope you can see this. Okay, fine. Now, if possible, guys, you also open your model. Okay, see, first is check issued but not presented. Check issued but not presented. Important point is but not presented. Okay. Now, friend, always remember like this. Always. This is your cash book. This is your passbook. Okay. Now, in cash book, this is your receipt side. This is your payment side. In passbook, this is your payment side and this is your receipt side. Right? This is your cash book. This is your passbook. R means receipt, P means payment, and ऐसा होता है. This is your debit side, credit side. Now check issued, मतलब आपने पैसे दिए. It should be in credit side of cash book and it should be on debit side of passbook. Simple, guys. Check issued but not presented. Guys, presented is always in passbook. Presented is always in passbook. बट वो यहां पर प्रेजेंट हुआ नहीं. यहां पर प्रेजेंट हुआ नहीं. इट मीन्स इट इज credited in cash book but it should be debit in passbook जो अभी तक हुआ नहीं. And this is therefore it is always debit in BRS. Always debit in BRS. हमने रूल सीखा था अभी. Do what is not done. क्या सीखा था? Do what is not done. Sir, check issued means we have credit in cash book but it is not yet debit in passbook. Not yet debit in passbook. Right? And if you see once again in my PPT, guys, okay, in BRS, see, check issued. See, check issued is on credit side of cash book, right? Check issued should be in credit side of cash book and it should be on debit side of passbook, right? As per our format. The same I have written, guys. Same I have written. It should be credit side of cash book. It should be debit side of passbook. कैश बुक में क्रेडिट हो गया, पासबुक में डेबिट नहीं हुआ है. डू व्हाट इज नॉट डन. डेबिट इन बीआरएस. सिंपल. नेक्स्ट, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर. बट नॉट क्लियर. क्लियर मतलब क्रेडिटेड. राइट? याद रहे. बट नॉट क्लियर. क्लियर मतलब credited. Now, friend, cash book, passbook, receipt side, payment side, payment side, receipt side, right? Check deposited. So money will come. It is my income. It should be debit in cash book
it should be credited in passbook, right? So we have deposited the check in cash book, but it is not yet clear in passbook. So we can say, sir, it is debit in cash book, but it is not yet credit in passbook. And therefore, this is always credit in BRS. It is always credit in BRS. Once again, do what is not done. सर पासबुक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, हाँ तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दो, सिंपल क्रेडिट कर दो. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. अलाउड मतलब गिवन बाय बैंक, गिवन बाय बैंक, कैश बुक एंड पासबुक. बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमारी इनकम है गाइस, हमारी इनकम है, तो यहां डेबिट और यहां क्रेडिट. सो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो बैंक को तो पता ही होता है, तो बैंक में हो जाती है एंट्री पासबुक में, हमें पता नहीं होता है, या तो हमें पता लेट चलता है. सो वी कैन से सर इट इज क्रेडिट इन पासबुक, it should be debit in cash book, yet not done, so it is always debit in BRS, always debit in BRS. Our income is there. Number 4, interest expenses charged by bank. It is like a bank charges. It is like a bank charges. Cash book and passbook. It is our expenses, guys. Our expenses, it should be here on credit side, here on debit side. See, bank ने कर दिया है by bank. So bank has debit our account, but we don't know. So अभी तक हमने उसको credit किया नहीं. So this is always credit in BRS because it is my payment. It is my payments. It is my expense, right? Interest and dividend collected. The wording is collected. बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट किया. रिमेंबर गाइस, कलेक्ट बाय बैंक. कलेक्ट का मीनिंग लिखो आप, क्रेडिटेड बाय बैंक. कैश बुक, पासबुक, बैंक ने क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया. बैंक ने क्रेडिट किया, मुझे डेबिट करना चाहिए. इट इज कलेक्ट बाय बैंक, इज क्रेडिट बाय बैंक. बैंक ने क्रेडिट कर लिया लेकिन मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने अभी तक डेबिट नहीं किया. ऑलवेज डेबिट इन BRS, ऑलवेज डेबिट इन BRS. डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक. क्या लिखा है, पेमेंट बाय बैंक. बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया. कैश बुक, पासबुक, रिसिट साइड, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड, रिसिट साइड. बैंक ने पेमेंट कर दिया गाइस. यहां पर पेमेंट मतलब दिस, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, हमें पता ही नहीं है, डायरेक्ट कर दिया है, हमने अभी तक एंट्री पास नहीं की है. जब पता चलेगा तब पता चलेगा, लेकिन वो तो 2-3 दिन के बाद पता चलता है. सो इट इज ऑलवेज क्रेडिट इन BRS बिकॉज अभी तक क्रेडिट हुआ नहीं है. बैंक ने डेबिट कर दिया, पेमेंट कर दिया हमारे बिहाफ पे, मुझे पता ही नहीं है, कैश में अभी तक क्रेडिट हुआ नहीं. ऑलवेज क्रेडिट इनटू BRS. डायरेक्ट पेमेंट into the bank by customer.
इट इज अवर रिसिट्स। कस्टमर ने हमारे खाते में पैसा डाल दिया, हमारी इनकम है, राइट। कैश बुक, पासबुक, रिसिट, पेमेंट, पेमेंट, रिसिट। बैंक में क्या कर दिया भाई साहब ने, डायरेक्ट पैसा जमा करवा दिया, राइट। और हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता, बैंक में आ गया पैसा, बैंक में रिसिट आ गई, हमें नहीं पता है। therefore it is always debit in BRS. It is always debit in BRS. Dishonor of bill discounted with the bank. अभी हमने सीखा गाइस, ये हमारा कैश बुक, ये हमारा पासबुक। जब हम बिल डिस्काउंट करवाते हैं, राइट, तो बैंक में पैसा आता है, राइट। तो जब डिस्काउंट करवाते हैं तो इट विल बी डेबिटिंग कैश बुक, इट विल बी क्रेडिटिंग पासबुक, जब डिस्काउंट करवाते हैं तब। बट जब वो डिसऑनर होता है, इट मीन इट विल बी रिवर्स, इट शुड बी रिवर्स। याद रहे कि जब डिसऑनर होगा तो बैंक को पहले पता चलेगा, तो बैंक उसको रिवर्स कर देगा, बैंक विल रिवर्स। हमें उसको रिवर्स करने का बाकी है। सो बैंक ने रिवर्स करके एंट्री कैंसिल कर दी, बट हमें उसको रिवर्स करने का बाकी है। सो दिस इज नॉट रिवर्स हियर, इट इज ऑलवेज क्रेडिट इन BRS, ऑलवेज क्रेडिट इन BRS। और आगे ये भी सीखा हमने कि जब बिल डिसऑनर होगा तो हमें पैसा देना पड़ेगा बैंक को, इट इज माय पेमेंट, therefore also it should be always credit in BRS, always credit in BRS. डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, बैंक ने पैसा कलेक्ट किया, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। कैश बुक, पासबुक, रिसिट, पेमेंट, पेमेंट, रिसिट। कलेक्ट कर लिया बैंक ने, मतलब बैंक ने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इट शुड बी डेबिट हियर, बट हमें पता ही नहीं है, बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया, हमें पता ही नहीं है। इट इज ऑलवेज डेबिट इन BRS, it is always debit in BRS, always debit in BRS. So guys, these are 9 basic transactions which generally they ask in a question, in a question. And now the last point, then your queries will be there. It is regarding amended cash book, amended cash book, or you can say rectified cash book. Amended cash book, or we can say rectified cash. Okay, so this will be the last point, then we will discuss your queries, guys. Now friend, see, sometimes, as you know, they will ask you to prepare revised, adjusted, or rectified cash flow. Then you need to have only 3 to 4 points in mind. Pehla, such cash book should be prepared only when instructed in question. जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है तब तक आपको ये बनाना नहीं है, लेकिन कई बार ये बनाना कंपलसरी है, राइट, कंपलसरी है। कब? हाउएवर
if BRS is to be prepared on year end date, मतलब आपका 31 मार्च क्लोजिंग है और 31 मार्च को ही बनाना है BRS. It means you are preparing BRS as on last date of the year, which is your closing date. Then it is compulsory to prepare this, even if not instructed in question. Even if not instructed in question. Next, in such case, RCB मतलब जो क्वालिफाई हुआ वो नहीं अभी, ठीक है, रेक्टिफाइड कैश बुक. ओके, रेक्टिफाइड कैश बुक एंड BRS बोथ आर प्रिपेयर्ड ऑल टूगेदर. याद रहे दोनों साथ में बनाते हैं, पहले बना दिया कैश बुक माने ऐसा नहीं होता, दोनों साथ में बनाते हैं. अभी जो हमने 9 एरर सीखी मॉड्यूल से, राइट, वी हैव लर्न डिफरेंट 9 एरर्स. सर कहीं डेबिट किया, कहीं क्रेडिट किया, कहीं डेबिट किया, कहीं क्रेडिट किया, बराबर है वही. ऑल एरर्स एंड ओमिशन ऑफ कैश बुक आर एडजस्टेड इन कैश बुक, मतलब रेक्टिफाइड कैश बुक. एंड ऑल एरर्स एंड ओमिशन ऑफ पासबुक आर एडजस्टेड इन BRS. हमने भी 9 एरर जो सीखी, राइट, उसमें से जो जनरली जो पहली 2 एरर थी, फर्स्ट 2 एरर, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. जनरली पासबुक में ये 2 एरर होती है कि सर हमने चेक इश्यूड किया लेकिन अभी पासबुक में प्रेजेंट हुआ नहीं. सर हमने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी पासबुक में वो कलेक्ट हुआ नहीं. जनरली बोल रहा हूं, जनरली दिस 2 एरर आर ऑफ ए पासबुक एंड रिमेनिंग ऑल एरर जनरली आर ऑफ द कैश बुक. तो जब आपके सामने 7 एरर आए, से फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में, तो पहले आपको नक्की करना है कि ये एरर ओमिशन किधर हुआ. अगर ये एरर ओमिशन पासबुक में हुआ है, मतलब पासबुक में एंट्री बाकी है, पासबुक ने गलती की है, देन वी शुड एडजस्ट इन BRS. लेकिन ये कैशबुक की एरर है, कैशबुक का ओमिशन है, देन आई शुड एडजस्ट इन ए रेक्टिफाइड कैश बुक. सो रिमेंबर दिस 4th पॉइंट जो भी पढ़ रहे हैं, ऑल एरर्स एंड ओमिशन ऑफ कैश बुक आर एडजस्टेड in rectified cash book and all errors and omission of passbook are adjusted in BRS. तो अगर देर आर 7 एरर्स दी है जिसमें से 2 पासबुक की एरर है और 5 कैशबुक की एरर है, तो 2 पासबुक की एरर की इफेक्ट हम BRS में देंगे और 5 कैशबुक की एरर की इफेक्ट हम BRS में नहीं देंगे, हम रेक्टिफाइड कैशबुक में देंगे. सो 5 एंट्रीज, 5 अमाउंट विल बी इन रेक्टिफाइड कैश बुक, 2 एंट्री, 2 अमाउंट विल बी इन ए BRS. रूल्स ऑफ BRS रिमेन सेम. 2 रूल सीखे, दो रूल, डू व्हाट इज नॉट डन, रेक्टिफाई द एरर, वो सब सेम रहेगा, नो चेंज. अब जब आप क्लोज करोगे गाइस, अब रूटीन सब में क्या करते हो गाइस, इसमें पहले मैंने बताया था कि सर रूटीन कैश बुक से करेंगे तो आंसर पासबुक से आएगा, रूटीन कैश बुक से करेंगे तो आंसर पासबुक से आएगा. बराबर, बिल्कुल सही है, वही करना है. लेकिन अभी शुरुआत आप कैश बुक वाले बैलेंस से नहीं करेंगे जो सब में दिया है. अब आप BRS की शुरुआत कहां से करेंगे, द क्लोजिंग बैलेंस और ओवरड्राफ्ट of rectify cash book is starting point of BRS. अगर मान लो कि सब में ऐसा बोला है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 5 लाख, फॉरगेट इट. यू प्रिपेयर द रेक्टिफाइड कैश बुक, वहां क्लोजिंग बैलेंस आया 3 लाख, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक आया 3 लाख,
भाई क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है बैलेंस ऑफ कैश बुक 5 लाख, नहीं गोली मारो, नहीं नहीं, रेक्टिफाइड कैश बुक क्या हुआ एरर के बाद, सर अब नया बैलेंस, करेक्ट बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस, रिवाइज बैलेंस, करेक्ट बैलेंस इज 3 लाख। हाँ तो बीआरएस की शुरुआत 5 लाख से नहीं करनी है, 3 लाख से करनी है। सो यू शुड स्टार्ट द बीआरएस एज पर द बैलेंस और ओवरड्राफ्ट, नॉट एज पर कैश बुक but as per the revised cash book, and then you should close the BRS as per our routine. Will close as per the balance OD as per passbook. So this is important point of rectified cash book, or you can say revised cash book. Okay guys, तो पहले हम बात करेंगे योर क्वेरीज ऑफ बीआरएस बिकॉज अभी ओपन है। ओके उसके बाद we will take the queries of your bills. So you can file your query in chat box, और टेक्निकल पीपल अगर आप वहां पर हो तो आप उनको अनम्यूट करने का परमिशन दो, या तो फिर आप चैट बॉक्स में लिखो गाइस जो आपको ठीक लगे। आई एम ओके विथ ऑल ऑप्शंस। ओके जरदोश ऐसा बोल रहे हैं सर एग्जाम्पल से समझाएंगे, आरसीबी बिल्कुल समझाएंगे डियर, हमारे पास जितना समय अवेलेबल है 100% समझाऊंगा। देखो लेट्स अंडरस्टैंड, सी यहां से जो क्वेश्चन है, let's just not in detail but let's just brief about the how it goes. Illustration number 5. Okay what they've asked, see what they've asked, so first rectification in cash book and then BRS. Okay 2 points are there, right? RCB and BRS. So see cash book is different, BRS is different. Now I told you very categorically we should prepare this both simultaneously, एक साथ बनाना है, अलग अलग नहीं, एक साथ। क्यों एक साथ बनाना है सर? जो कैश बुक एरर होगी वो लिखेंगे कैश बुक में, जो पासबुक एरर होगी वो लिखेंगे पासबुक में। ओके सो ये दोनों में साथ में एक साथ बनाना है। ओके नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, on 30 September bank account of X of bank column of cash book is overdrawn। ओवरड्रॉन का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, एंड क्या सीखा हमने? ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ओके सो सी हियर इट इज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, माय स्टार्टिंग पॉइंट। ओके नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रिफर each of this error, now listen carefully, if it is बाकी के स्टूडेंट भी ध्यान रखें बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसने जो पूछा वो भी बिल्कुल सही है। एक आध क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नाउ देयर आर 7 एरर, नाउ व्हाट आई विल डू, 7 एरर में से अगर वो कैश बुक की एरर है तो आई विल गिव इफेक्ट इन कैश बुक, अगर वो पासबुक की एरर है आई विल गिव इफेक्ट इन बीआरएस। ओके फर्स्ट एरर, a check of 13 lakh deposited on 29 September 22 was credited by the bank on 3rd October। credited by the bank कब किया उसने? ऑन
3 अक्टूबर। मेरा कट ऑफ डेट कौन सा है? सितंबर है। मतलब मुझे सितंबर में नहीं किया, उसको सितंबर से पहले करना चाहिए था। तो अगर सितंबर के बाद किया, इट मीन्स इट इज पेंडिंग फॉर मी फॉर बीआरएस। ओके, सो इट इज credited on 3 October, means not credited on 30 September। ओके, पहली बात तो मुझे क्रेडिट करना है, मुझे उसको क्रेडिट करना है बिकॉज क्रेडिट सितंबर के बाद हुआ है। डू व्हाट इज नॉट डन, मुझे क्रेडिट करना है। लेकिन गलती किसकी है? गलती किसकी है सर? गलती बैंक की है, बीआरएस की है। तो आई विल टेक 13,40,000 नॉट इन कैश बुक बट इन बीआरएस, but in BRS. See, it is part of BRS. It is part of BRS, not in cash book. It is part of BRS. Okay. Next, a payment by check 16,000 recorded कहां? Twice in cash book. आपने कैश बुक में 2 बार लिख दिया। अब ये पेमेंट है फ्रेंड, पेमेंट। पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड। आपने 16 2 बार लिख दिया। एक बार रिवर्स करना पड़ेगा मुझे 16। किस में रिवर्स करना पड़ेगा? कैश बुक में। देखो, इट इज ऑन डेबिट साइड, इट इज ऑन रिवर्स्ड। यस, इट इज रिवर्स। ओके। थर्ड, ऑन 29 September बैंक क्रेडिटेड 117 receipts from the customer of X but advice not received by X। X को बेचारे को पता ही नहीं था कि पैसे आए हैं। ओके, बैंक ने क्या किया है? देखो, बैंक ने क्रेडिट किया है, मतलब पासबुक में क्रेडिट किया, तो कैश बुक में डेबिट होना चाहिए। लेकिन बेचारा एक्स को पता ही नहीं, इसलिए कैश बुक में डेबिट ही नहीं हुआ है। डू व्हाट इज नॉट डन, डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे 1/17 डेबिट करना चाहिए कैश बुक में, कर दिया मैंने 1/17 डेबिट। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 580 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में नहीं लिखा है बैंक चार्जेस, हमने आगे सीखा, वो हमारा एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, इट शुड बी ऑन क्रेडिट साइड। इट इज रिसिट साइड फ्रेंड्स, इट इज ए पेमेंट साइड। ओके, सो आई शुड ऑन क्रेडिट साइड, मैंने खर्चा नहीं लिखाया। नेक्स्ट, ऑन 6 सितंबर बैंक किसने क्रेडिट किया है? बैंक क्रेडिटेड बाय एरर। बैंक ने गलती से 20 क्रेडिट किया, तो हम डेबिट करेंगे, रिवर्स करेंगे, लेकिन किसने किया? बैंक ने किया। इट विल बी इन बीआरएस, इट विल बी इन बीआरएस, बिकॉज बैंक की गलती है, बिकॉज बैंक की गलती बीआरएस में आएगा। सेकेंड लास्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 140 डिस्काउंट बाय एक्स विद द बैंक, दिस बिल वॉज डिसऑनर। हमने सीखा था कि जब बिल डिसऑनर होगा तो हमें बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बट क्या लिखा है? नो एंट्री हैज मेड इन बुक्स ऑफ एक्स। बुक्स ऑफ एक्स का मतलब होता है कैश बुक। आगे मैंने आपको सिखाया ऊपर ही कि बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, इट शुड बी ऑलवेज क्रेडिट इन कैश बुक, बिकॉज हमें पैसे बैंक को देने पड़ेंगे। इट शुड बी राइट साइड ऑफ कैश बुक on payment side. See, it should be right side of cash book. This is debit side and this is payment side, credit side. And the last, check issued but not presented. Check issued but not presented कहां प्रेजेंट नहीं होता है? बैंक में। मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, आगे भी सिखाया था। कैश बुक, पासबुक, चेक इश्यूड मतलब हमारा पेमेंट, कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए, पासबुक में डेबिट होना चाहिए। लेकिन सर अभी तो वो प्रेजेंट हुआ नहीं है,
पासबुक में डेबिट हुआ नहीं है, डू व्हाट इज नॉट डन, तो पासबुक में प्रेजेंट कर दो, डेबिट कर दो 13 लाख रुपया। देखो पासबुक में यहां लिख दिया है, ये रहा। सो ऑल एरर्स आर डन। देखो 1 2 3 and 4, सी 1 2 3 and 4, 4 errors are in cash book and 3 errors are in passbook. 1 2 and 3, from 7 error, 4 are in cash book, 3 are in passbook. See total 7 है हमारे पास, right? Okay. अब what is my closing balance? See, let me change the color. Just a minute, guys. Better. Okay. Now this is called my revised balance. And last point, it will be starting point of BRS. This will not be starting point of BRS. No, no, no. My starting point of BRS will be this. And if I correctly start 11242 here, then my answer will be tally 2075 with my question 2075. Okay, this way you should do. किसने बोला था क्वेश्चन ये? जरदोश, जरदोश। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ओके, पूरा सब मैंने समझा दिया है, स्टेप भी लिखा दिए। आकाश सर, डिसऑनर का पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। आकाश, यू आर टॉकिंग अबाउट ये बिल की बात हो रही है, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, उसकी बात कर रहे हो आकाश? मुझे यस या नो बोलो जल्दी। यस सर, उसी के बारे में हो रही है। वेरी गुड यार, आई लव्ड इट। सी, लेट मी हैव ए सी। अभी मैंने क्या बताया, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। लेट मी हैव ए ब्लू कलर वंस अगेन। ओके, देखो मैंने ऐसा समझाया आपको डियर, आप ध्यान से देखना। जब आप बिल डिस्काउंट करते हो ना, देखो ये कैश बुक है, रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है, पासबुक है, पेमेंट साइड है, रिसिप्ट साइड है। ओके, जब आप बिल डिस्काउंट करते हो तो पहले आपको पैसा मिलता है। पहले मुझे यस या ना बोलो। आकाश, आकाश ने पूछा था ना, आकाश। यस सर। देखो जब आप बिल बिल बैंक में डिस्काउंट करते हो, तो मैंने जी समझा सर। बिल के शटर में 10,000 का बिल है, हाँ जी सर, 10,000 का बिल। 200 डिस्काउंट काट लेगा बैंक, तो आपके खाते में आएंगे 9800। यस सर, आएंगे सर। यू विल रिसीव द मनी। यस सर। सो यू विल रिसीव मनी, सो इट शुड बी रिसिप्ट इन। दिस साइड। यस सर। यस गॉट इट? सर। ये सिंपल है। हाँ जी सर, ये सिंपल है। अब जब बिल डिसऑनर होगा ना, समझो जब बिल डिसऑनर होगा तो पहले बैंक को पता चलेगा, ओके सर। तो बैंक पहले क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा। 98 डेबिट ठीक है, पासवर्ड। अब यस। आपको रिवर्स करने का बाकी है, बिकॉज आपको 30 सितंबर तक एडवाइस मिली नहीं है। अच्छा सर, ओके सर जी। देयरफॉर मैंने बताया इट इज ऑलवेज क्रेडिट इन बीआरएस। ओके सर जी, थैंक यू सर। तो ये दोनों एंट्री आपने हो गई है, ये दोनों एंट्री हो गई है, बट जो रिवर्स किया ना बैंक ने, हाँ जी सर। वो करने का बाकी है। और दूसरा भी याद रखो, देखो ये कंसेप्ट भी एक इजी कंसेप्ट बताता हूं, मैंने अभी बिल में समझाया कि बिल जब डिसऑनर होगा तो आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा ना। यस सर। तो बैंक को पैसा देना है, पैसा देना है, देना है, तो आपको पैसे देने हैं, तो आपका पेमेंट साइड आएगा, क्रेडिट साइड। कैश में क्रेडिट होगा। ठीक है ना?
ओके सर। इसलिए आप ऐसा याद रखो कि बिल डिसऑनर ऑलवेज क्रेडिट इन बीआरएस, ओके सर। सर बिकॉज एक वो और। कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, बैंक को पैसा देना है। ठीक है, ओके सर। या माय प्लेजर डियर। सर वन मोर डाउट सर। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके सर। जॉय, जॉय आरसीबी मैंने पूरा ये जो पूरा सम किया वो वही है डियर। जॉय, दिस इज आरसीबी। ये जो अभी मैंने पूरा सम समझाया, आरसीबी इज सेम एज कैश बुक। पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, उसका कोई नया फॉर्मेट नहीं है। लेकिन मैंने क्या समझाया, जो कैश बुक की एरर है वो आरसीबी में लिखनी है, और जो पासबुक की एरर है वो बीआईएस में लिखनी है। बाकी आरसीबी एंड कैश बुक आर सेम, सेम फॉर्मेट, डेबिट रिसीव एंड क्रेडिट पेमेंट। ओके जॉय, थैंक्स। अब इशिका, सर आई हैव डाउट इन इलस्ट्रेशन नंबर 10, जस्ट अ मिनट डियर, लेट मी गो देयर। 7, 8। इशिका अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डियर, बोलो बोलो कौन सा पॉइंट। सर ये जो फर्स्ट पॉइंट एंड फिफ्थ सिक्स सेवन पॉइंट्स ये नहीं समझ आ रहे हैं। सी, क्या लिखा है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें अगर हम, ओके देखो, पहले हमारा कट ऑफ डेट 30 जून है, राइट इशिका। यस सर। ओके आप अनम्यूट ही रहो, ठीक है। सी बीआरएस चैप्टर में कट ऑफ डेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारा कट ऑफ डेट 30 जून है। अब बैंक ने क्या किया है, जुलाई तक उसको क्रेडिट नहीं किया है, नॉट लिखा है, नॉट। तो हमारा रूल क्या है, डू व्हाट इज नॉट डन। यस बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया तो हमें क्रेडिट कर देना चाहिए। इट इज क्रेडिट इन बीआरएस, सिंपल। गॉट इट। यस सर। ओके उसके बाद कौन सा बोला, फिफ्थ सर फिफ्थ। फिफ्थ ऑन 28 जून कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, हमारे खाते में पैसा आ गया, लेकिन क्या एंट्री बाकी है, नो एंट्री इन कैश बुक, नो एंट्री इन कैश बुक। अभी सिखाया मैंने आपको, कैश बुक एंड पासबुक, रिसिट, पेमेंट, पेमेंट, रिसिट। क्या किया है, डिपॉजिट कर दिया कस्टमर ने हमारे खाते में, कस्टमर ने करवा दिया तो हमें पता ही नहीं है। तो कस्टमर ने सीधा पैसा हमारे खाते में जमा करवा दिया, लेकिन हमें पता नहीं है, राइट। क्या लिखा है, नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक, कैश बुक में करने का बाकी है, देयरफॉर दिस इज डेबिट इन बीआरएस बिकॉज इट इज माई इनकम, राइट इशिका। यस सर। यस गॉट इट सर। नाउ। यस। कस्टमर ने हमारे खाते में पैसा डाल दिया तो पासबुक में आ गया, लेकिन कैश बुक में लिखने का बाकी है। यस सर। ओके एंड सेवंथ, अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। कहां कहां डेबिट हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में, बैंक मतलब स्टेटमेंट। पासबुक में, मतलब पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, राइट। आई होप यू नो दैट, राइट। यस सर। ओके पासबुक में डेबिट हुआ है, मतलब यहां पर है वो। ओके क्यों डेबिट हुआ है, बिकॉज चेक इज डिसऑनर। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, लेकिन वो सब क्या कब कब किया उन्होंने, 1 जुलाई को। सी मुझे 1 जुलाई का ये सेंटेंस है ना, इसको इग्नोर मारना है। क्यों इग्नोर मारना है, सर नया चेक आया 5 जुलाई को। सर मेरा बीआईएस का डेट कौन सा है, 30 जून, मैंने अभी आपको बताया कट ऑफ डेट 30 जून। अगर 30 जून के बाद कुछ हुआ तो मुझे मतलब नहीं है। तो ये सेंटेंस जो हुआ ना, रीडेटेड ऑन 5 जुलाई, उसको नहीं नहीं लिखना है, बस वो पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ यहां तक पढ़ना है। देखो
सिर्फ यहां तक। समझे मेरी बात? यस सर। ओके, तो बैंक ने डेबिट किया तो मुझे क्रेडिट करना चाहिए, क्रेडिट करने का यस सर। बाकी है। Therefore it is credit in BRS. बैंक ने डेबिट कर दिया, मुझे क्रेडिट करने का बाकी है। ओके सर। ओके, सर एक थर्ड पॉइंट भी समझा दो। इसी सम का। यस अब सर। 2 मिनट ठहर जाओ, बाकी लोगों को मैं ले लूं, ठीक है? जस्ट अ मिनट डियर। ओके। How to prepare RCB jaw? Sir, I will try to solve problems, but if I get any doubts, I will. भैया साहब मुझे अप्रोच कर सकते हो डियर, राइट? डोंट वरी अबाउट दिस। कुणाल, कुणाल क्या है? कुणाल आपका क्वेश्चन बताओ, कुणाल एंड रोहित। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डियर। यस गुड कुणाल, आफ्टरनून सर। सर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एकोमोडेशन का कंसेप्ट है उसको एग्जांपल से समझा दीजिए। कौन सा वाला? एक्यूमुलेशन ऑफ बिल्स ऑफ एकोमोडेशन। हाँ, एक्सचेंज। ठीक है यस ठीक सर। है। रोहित आपका क्वेश्चन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून डियर। Sir, example number 9, sir, bills collected by the bank on behalf of the customer. किसमें? 9 में? जस्ट मिनट हाँ डियर। एग्जाम्पल नंबर इसी में ना? हाँ सर, इसी में है। जस्ट मिनट डियर। 9, ओके। कौन सा वाला बोल रहा है? Bills collected by the bank on behalf of the customer. इसमें कहा? 9 में तो ये है, Question नहीं सर। बाद में नीचे। हाँ हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 के नीचे 3.11। ओके, सॉरी सॉरी, ओके, गॉट इट गॉट इट। 3.11। ये यस सर। देखो, फिर से समझ। बिल कलेक्ट बाय बैंक, मैं नीचे फिर से समझा रहा हूं। यहां पर आप ऐसा एक रूल लिख दो डियर, बैंक हमारे बिहाफ पे कुछ भी कलेक्ट करेगा ना तो वो बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट करेगा। आप वो रूल लिख दो एक जगह पर। हेलो, यस सर, यस सर। देखो, ये कैश बुक है, पासबुक। आप ऐसा रूल लिख दो कि बैंक हमारे बिहाफ पे कुछ भी कलेक्ट करेगा, कुछ भी कलेक्ट करेगा, बैंक हमारे बिहाफ पे कुछ भी कलेक्ट करेगा, बैंक हमें क्रेडिट करेगा, यस सर। बिकॉज वो हमारी इनकम है। ठीक है? यस सर। तो बैंक हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट करे, डिविडेंड कलेक्ट करे, इनकम टैक्स का रिफंड कलेक्ट करे, कुछ भी कलेक्ट करे, तो पासबुक में क्रेडिट होगा, और बिकॉज हमारी इनकम है, कैश बुक में डेबिट होना चाहिए। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें पता चलता है 2-3 दिन के बाद, तो कैश बुक में एंट्री बाकी रह गई और पासबुक में हो गई। यस सर, तो कैश बुक में कर देना है। हाँ, तो ये नहीं हुआ है, बिकॉज मुझे पता नहीं, बिकॉज बैंक ने क्या डायरेक्टली कर लिया है। तो बैंक में हो चुका है, पासबुक में हो चुका है, लेकिन कैश बुक में बाकी है। यस सर। Therefore यहां लिखा है, देखो, इट इज ऑलवेज डेबिट इन बीआरएस। ओके सर। क्लियर? यस सर। ओके, विश ऑल द लक। थैंक यू सर। और अब कुणाल आपकी बारी। सी कुणाल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस सर। ओके, now accommodation. See, on 1st July, George draw the will of 180 on 3 months on Harry for mutual accommodation. ओके, सो जॉर्ज ने ड्रॉ किया,
हम जॉर्ज के बुक में करते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। ओके, सो पहली एंट्री BR2 हैरी, बिकॉज उसने विल ड्रॉ किया है, तो BR2 हैरी। फर्स्ट एंट्री ये है, 1 जुलाई वाली। ओके, इसकी एंट्री, हैरी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, देन जी had purchased goods worth ₹21 from the Jack on the same day. G endorse Harris acceptance to Jack in full settlement. उसने कितने रुपए का गुड परचेस किया है? 181, और उसने कितने रुपए का बिल दे दिया उसको? 180 का। ओके, 1000 का पैसा उसने उसको कम दिया। तो अब यहां से शुरू करेंगे फिर से एक बार। पहले क्या लिखा है उसने? जी परचेज द गुड्स फ्रॉम जैक, तो जी ने परचेस किया है, परचेस टू जैक, सिंपल एंट्री, परचेस टू जैक। अब जैक को कितना देना है? 181। सामने उसने क्या किया? इस बिल को उसको एंडोर्स कर दिया। ओके, तो देखो उसने रिवर्स कर दी एंट्री, पूरी की पूरी एंट्री रिवर्स कर दी। ये बिल यहां क्रेडिट हो गया, ये भाई साहब यहां डेबिट हो गए, और जो डिफरेंस आया, दिस इज योर डिस्काउंट और रिबेट। हेलो, हेलो कुणाल, Yes, sir. आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा, एक काम करते हैं, अगर आपको यूनिट 200 से ये एकोमोडेशन ओनली, राइट? Yes, sir. तो फिर ये सम करते हैं जो प्योरली एकोमोडेशन का है, ये जल्दी समझ में आएगा आपको। ठीक Yes, है, sir. X draw on bill on Y 30,000, 3 months, Y accept the bill. दिस इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, Yes, sir. X ने ड्रॉ किया है, तो X के लिए वो BR है। कितने रुपए इसका बिल है? 30,000 का। किसके ऊपर है? पाई के ऊपर। तो पहली एंट्री आई BR2 Y 30,000। ओके, Y accept the bill, send to X, X discounted the bill for 2800, तो उसको पैसे मिलेंगे 2800। बिल कितने का गया? 30,000। डिफरेंस को बोलेंगे चार्जेस। ठीक है, यहां तक क्लियर कुणाल? Yes, sir. ओके, यहां तक ये दो एंट्री क्लियर है। Yes, sir. Clear है। ओके, अब जैसे सिखाया था एकोमोडेशन में कि दोनों पैसे को शेयर करेंगे। ठीक है, तो एक्स इमीडिएटली रेमिट 9600 टू वाई। उसने पैसा दे दिया कितना उसको? 9600। किसने किसको दिया? एक्स रेमिट टू वाई। एक्स ने वाई को पैसे दिए, तो एक्स के पास से पैसे गए, तो वो बैंक को क्रेडिट करेगा। ठीक है, Yes, sir. अब यहां आपको रेशियो नहीं दिया है, तो आपको रेशियो ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे ढूंढोगे आप? इसके पास पैसे आए थे 2800 आए थे पैसे बैंक से, उसने Yes, क्या sir. किया? 9600 इसको दे दिया, और बाकी का पैसा खुद के पास रखा। मतलब ये पैसा एक्स के पास रहा, और ये उसने वाई को दिया। समझ में आ रहा है टोटल में से? Yes, sir. Yes, sir. तो वीकेंड से ये उसे डबल है, डबल। तो रेशो कितना हुआ? 2:1। पहले ये समझना पड़ेगा। Yes, sir. यहां तक समझ में आया? रेशो 2:1 है। Yes, sir. ठीक है, अब वो क्या करेंगे? मैंने सिखाया था डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट को भी इस रेशो में शेयर करेंगे। भाई साहब इतना बेयर करेगा, और वाई कितना बेयर करेगा? 400 डिस्काउंट। ठीक है, Yes, sir.
तो जब उसने उसको 9600 दिए तो भाई साहब क्या करेगा, 9600 के साथ साथ ये 400 भी उसको पास ऑन करेगा भाई। तो एक्स वाई को क्या बोलेगा, अगर तू पैसे ले रहा है तो डिस्काउंट भी बेयर करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई ये जो 10,000 है, 10,000 ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कहां से आया। 9600 प्लस 400, दैट इज कॉल्ड 10,000, दैट इज कॉल्ड 10,000। Yes, sir. ओके, एल्स यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे कि आप इस एंट्री का 1/3 करोगे ना, 1/3, तो ये पूरी एंट्री है। देखो 30,000 का 1/3 10,000 है, 28,800 का 1/3 9,600 है, 1,200 का 1/3 400 है। तो ऊपर की पूरी एंट्री का 1/3 है ये, बिकॉज रेशियो इज 2:3 and 1:3। ओके Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट, एक्स ने वाई को बाकी के पैसे नहीं दिए। अब क्या होगा, जब सेकंड बिल पिक्चर में आएगा तो अब रिवर्स स्टोरी होगी। एंड देयरफॉर एक्सेप्ट द बिल ऑफ 42,000 फॉर 3 मंथ्स। किसने ये सब एक्सेप्ट कर लिया, एक्स ने एक्सेप्ट किया। याद रहे कि ये एक्स ने ड्रॉ किया था और अब एक्स क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, Yes, sir. मतलब वो उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा बिकॉज एक्स एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एंटी पास करेगा वाई टू बिल्स पेबल। कितना, 42,000। कितना, 42,000। दिस इज सेकंड बिल एंड दिस इज फर्स्ट बिल। क्लियर? ओके कुणाल, Yes, sir. अब सर ये 42,000 कैसे आया? नहीं वो दिया है क्वेश्चन में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ दिया है, वही लिखना है, वो हमेशा दिया होगा क्वेश्चन में, चिंता मत करो। सर रेमिट का मीन्स मतलब क्या होता है? रेमिट मतलब सेंड, वो पैसा नहीं दे पाया, पहले बिल का पैसा बाकी था वो नहीं दे पाया। ओके सर। 30,000 का बिल था, 10,000 दिया, 20,000 देने का बाकी है, यस सर। 1/3 दे दिया, 1/3 2/3 देने का बाकी है, तो 20,000 नहीं दे पाया, इससे सेकंड बिल पिक्चर में आया। यस सर। ओके, अब सेकंड बिल भाई ने डिस्काउंट करवा लिया। कितने में डिस्काउंट करवाया, 40,110। लेकिन ये किसने करवाया, वाई ने। एक्स के बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। सो इस अमाउंट की एक्स के बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज किसने करवाया, वाई ने। यस सर। ओके, अब क्या करता है वाई, वाई सेंट 6740 टू एक्स। वाई ने एक्स को पैसे दिए, तो एक्स के पास पैसे आ रहे हैं, तो एक्स डेबिट करेगा। डेबिट किया, देखो 6740 डेबिट किया, बराबर है, राइट। यस सर। अब जो दूसरे बिल का डिस्काउंट है, अब मैं देखो, आप ये सब मत देखना, खो जाओगे। आप मैं सिखाता हूं वो सीखो। दूसरा बिल 42,000 का है, ये रहा, राइट। यस सर। डिस्काउंट कितने में किया है, 40,110, राइट। 42,000 माइनस करो 40,110, कितना आ रहा है, बताओ मुझे, कैलसी पे करो, बताओ कितना डिफरेंस आया। सर 1890। 1890। 90। यस सर 90। ये 1890। ये बैंक ने डिस्काउंट काट लिया। यस सर। वो एक्स एंड वाई वेर करेंगे सेम रेशियो में, 2:1 में, 2/3 and 1/3। तो यस सर। इसका 2/3 करो, कितना आ रहा है, सर 1260। वही आया, सेम। यस सर। गॉट इट। ये सेकंड बिल का चार्जेस है जो उन्होंने शेयर किया है।
यस सर। ठीक है, तो देखो सेकंड बिल था 42,000 का, बैंक ने पैसे दिए 40,110, सो टोटल डिस्काउंट आया 1890, एक्स एंड वाई का रेशियो ये रहा 2:1, यस सर। तो दूसरा एक्स बेयर करेगा, तो एक्स को बेयर करना है 1260। अब ये दोनों का टोटल है 8,000। दिस इज, ये भी इक्वेशन में दिया नहीं, आपको समझना होता है। 6740 प्लस 1260, 8,000 डन। यस सर। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम बैंक करप्ट। एक्स मतलब जिसकी बुक में हम लिख रहे हैं, ये भाई साहब खुद बैंक करप्ट, और उसने कितना पैसा दिया, 50%, 50% दिया, 50% नहीं दिया। ओके, बिफोर दी मैच्योरिटी ऑफ द बिल। अब याद रहे कि ये बिल है, हमने अभी सीखा कि जब इंसॉल्वेंसी आएगा तो आप ऐसा याद रखो, सबसे पहले इसको रिवर्स करना पड़ेगा, बिल को करेंगे रिवर्स, बिकॉज बिल शुड बी कैंसल। गॉट इट? यस सर। ओके, एंड नाउ द लास्ट एंट्री। अब हमने सीखा है कि सर बिल को रिवर्स करेंगे और बाद में पार्टी को रिवर्स करेंगे। अब पार्टी को रिवर्स करेंगे मतलब जहां जहां वाई लिखा है मैं उसकी अमाउंट को राउंड कर रहा हूं, आप प्लस माइनस करते जाओ। देखो सबसे पहले वाई क्रेडिट 30,000, यस सर। आप लिखो कैलसी पे 30,000 यस सर। लिखा। यस सर। ओके, उसके बाद वाई डेबिट 10,000, उसमें से माइनस करोगे 10,000, यस सर। 20,000। यस सर। अब ये 42 पूरा रिवर्स हो गया, मैं उसको लेता नहीं हूं, राइट। यस सर। राइट सर। अब वाई क्रेडिट 8,000, क्रेडिट है 8,000, राइट। तो यस सर। 30,000 माइनस 10,000 प्लस 8,000, 8,000। दैट इज 28,000। तो वाई को ट्वेंटी रिवर्स एट कर देंगे, थाउजेंड ये रहा, वाई को रिवर्स कर देंगे 28,000, यस सर। और 50% दिया और 50% नहीं दिया, तो नहीं पचास दिया। टका बैंक में और 50% डेफिशिएंसी में, आधा दिया और आधा नहीं दिया। यस सर। गॉट इट? गॉट इट सर। एक बार फिर से देख लेना प्रॉपरली, ठीक है, यस अब सर। हो जाएगा, टेंशन नहीं है। नाउ क्लियर सर। नाउ क्लियर? फिर भी एक बार लिख देना, ठीक है, अपने हिसाब से। ओके सर। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। मैं अभी 10 सेकंड रख रहा हूं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, राइट। और बाद में इसका ले। डन? ओके सर। डन सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। थैंक यू। ओके, सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू सर। अरे इट्स माय प्लेजर डियर। ओके सर। ओके गाइस, सो टाइम इज ओवर, सो विश यू ऑल द लक फॉर योर एग्जाम्स। कुछ भी हो तो आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो। टिल दैट, थैंक्स फॉर द पेशेंट हियरिंग, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक फॉर द आंसर्स एंड थैंक फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ये रैपिड फायर था, फटाफट फटाफट 2 घंटे में 2 चैप्टर, तो थोड़ा मुश्किल होता है। आकाश, आप मुझे सोशल मीडिया पे पूछ लो, बिकॉज अभी टाइम ओवर हो गया है, इनका नेक्स्ट सेशन है। सर इंस्टाग्राम पे। हाँ, यस सर सर यस सॉरी फॉर भैया, आपकी आईडी। कहाँ पर हम आपसे पूछ सकते हैं डाउट? हाँ, आईडी सर इंस्टाग्राम की यू कैन आईडी आस्क है। फॉर इंस्टा, नो इशू, मान कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? हाँ हाँ, यस, यू कैन आस्क। ओके, सर इंस्टा आईडी सर। मेरे नाम से ही है, सी डॉक्टर मीर पुजारा। सी डॉक्टर नीत। ओके सर। Okay, guys. Goodbye. Thank you very much for patience hearing. Goodbye. ओके सर, हैव ए गुड डे सर। Same to you, dear. Yeah, session over.